तो आज हम लोग अपनी वैम्पायर के गेम को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसकी पहले 3 स्ट्रीम्स हो चुकी हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो देख लो, नहीं तो समझ में कुछ आने वाला है नहीं कि अभी चल क्या रहा है, तो फिर फ़ायदा नहीं है उसका। Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets around here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient here. Goodbye, Milton. हमें उस टारगेट पे जाना है जहाँ पे हमें वो वाई सिंबल दिखा रहा है। शायद हमें वहाँ जाके कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मैं गलत आ गया हूँ शायद। ओ वो बाहर है, मुझे बाहर जाना है, मैं गलत आ गया। और ये डोर्स लॉक्ड हैं सारे, तो फिर मुझे वापस बाहर से ही होके जाना पड़ेगा वहाँ पे। Took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. ये वही लड़की है जिसने हमें स्टार्टिंग में उस कैल से बचाया था, जब वो हमारे ऊपर पीछे से अटैक कर रहा था और इसने उसे मार दिया था। उस टाइम हमारी इससे कुछ ज़्यादा बातचीत हुई नहीं थी, और यही शायद लेडी एशबरी है जिसकी हमें मदद करनी है यहाँ के। तो देखते हैं हम क्या बात होती है। Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vampire. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate? He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. मेरे हिसाब से हमें सारे क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए अभी, क्योंकि आगे गेम में हमारे पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना बेटर रहेगा। तो मैं जितने हो सके उतने क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं उनसे, जिससे हमें गेम की बेसिक नॉलेज हो। I gather you have found an arrangement satisfying both ethical and corporal concerns. I was brought up not to snigger at my own jokes, Dr. Reed. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining. तो अभी तक जितनी बात हुई है मेरे हिसाब से हमें किसी क्रिमिनल या उस टाइप के किसी को पकड़ना है
और उसे मारना I've made नहीं a है, first payment, but the उसे हमें जिंदा blackmailer was पकड़ के greedy. लेडी I एशबरी must को देना refuse है। his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. तो अब हमें हैरियट जोन्स से मिलना है जाके, My life, as जो others कि know, शायद is यहाँ पे in your पेशेंट है या hands, फिर Dr. नर्स Reed. होगी, अभी पता नहीं I'm है मुझे। sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. तो अब हमें हैरियट जोन्स के पास जाना है। हैरियट जोन्स मेरे हिसाब से यहाँ की गॉसिप क्वीन है, क्योंकि जैसा कि उसने कहा, नॉट अ सिंगल पिन ड्रॉप्स है विदाउट द नॉलेज ऑफ हैरियट जोन्स। तो लेट्स सी हैरियट जोन्स कहाँ पर है। Simpletons, these nurses. Bred with no respect. What? मुझे हैरियट जोन्स का What is मूड this? कुछ ठीक Who नहीं लग are रहा है, you? जिस तरह से Get out of कन्वर्सेशन my ये room. स्टार्ट हुई है There's no हमारी। need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swanson? तो मुझे लगता है प्लीज़ काम डाउन सही रहेगा, क्योंकि शर्टअप कुछ ज़्यादा ही Please calm एग्रेसिव। down, madam. I हो assure you जाएगा। that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. ओह, This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor soul's हैरियट veil. जोन्स बात करने का स्टाइल ज़्यादा कुछ सोशल है नहीं। You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans,
Whores, all of them. They can't keep their legs shut. Oh, see them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable हैरियट proof, जोन्स को यहाँ की I'll not have नर्सेस the से कुछ staff ज़्यादा behave लगाव in है such a नहीं जिस manner हिसाब here. से वो This उनके is बारे your में कमेंट्स business, दे Doctor, रही है. not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a हमें position. सब नर्सेस से बात करनी पड़ेगी क्योंकि हमें क्लूज सर्च करने हैं गेम में और उसी से हमें ब्लैकमेलर को कहाँ ढूंढना है उसकी हिंट मिलेगी. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton so grumpy? मेरे हिसाब से ये पूछना दूसरे क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर होगा. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye, Nurse Hawkins. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. I wish I could be sick again. Blood boil with fever. शायद वो एक और नर्स है, हमें उससे बात करनी चाहिए. Pembroke is so lucky to have Dr. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety.
You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. हर चीज के लिए हिंट रिक्वायर्ड है. Most of the questions तो हमारे लिए अभी I'm लॉन्ग not भी हैं. familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Timmins. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. इस गेम में बस आसपास जाके लोगों से बात करने से भी हमारी एक्सपी बढ़ती है. Eavesdrop. Press V to activate your senses. हमें शायद इस आदमी से बात करनी चाहिए. इस आदमी का क्लू अभी तक लॉक्ड है. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survive the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. Taken care of each other since we came back from the front. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. This is a dangerous part of town. What are you doing here?
We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, पर एक बार मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे एक बार चेक कर लेना चाहिए. आई थिंक हमें इस गेट से होते हुए आगे जाना है, और वो गेट अभी ओपन नहीं हो रहा. हमें उस बोर्ड तक जाना है. आई थिंक वहाँ से गेम हमारा कंटिन्यू होगा. देखते हैं अगर हम ऊपर से होते हुए जा सकें तो. एक सेकेंड, ये लोग वैम्पायर हंटर्स हैं. शिट, इन लोग यहाँ पे गलत आए. ओ, मुझे वन शॉट किया. हमें मोस्ट प्रोबेबली वहीं जाना है. अभी मैंने दरवाजे पे F आइकन देखा था, इसका मतलब हम दरवाजे को अनलॉक कर सकते हैं. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. तो जिस बारे में हैरियट जोन्स ने हमें बताया था वो यही है. इसी नर्स की वहाँ पे बात हो रही थी, और यही वो स्ट्रेंज मैन है जिसके बारे में हम सबसे पूछ रहे थे अभी तक. तो आई थिंक हमें इंटेरोगेट करना है इस आदमी को. I don't read well, but thank you, I guess. तो वो नर्स और वो दोनों आदमी एक ही सेकंड में गायब हो चुके हैं. मुझे नहीं लगता उस आदमी के पास कोई सुपर पावर्स होंगी, जैसे वैम्पायरिक पावर्स या ऐसा सच कुछ, पर शायद हमें यहाँ पे किसी से लड़ना पड़ सकता है, ऐसी मुझे फील आ रही है एक.
This man has been savagely attacked and dragged to the floor. स्कैल्स हैं इस जगह पे भी, और मुझे अपनी हेल्थ को कंजर्व करके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जमा करना चाहिए, बिकॉज आई फील लाइक आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है काफ़ी ज़्यादा। एक और स्कैल। हमें ब्लड के लिए माइस को बाइट करना चाहिए, उससे हमें इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है, पर फिर भी। तो जैसा मुझे लग रहा था, ये एक बॉस बैटल है सीवर बीस्ट के साथ, और मुझे ये वाली बैटल इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लग रही है जितनी पुरानी वाली थी जिसमें हम ओल्ड मॉड में फ़ाइट कर रहे थे। उस बंदे के पास तो खतरनाक वाली एबिलिटी है, बॉडी क्लोनिंग, टेलीपोर्टेशन, सब कुछ था उसके पास। ऊपर वो जो ग्रीन बार है वो हमारी हेल्थ है, येलो बार हमारा स्टेमिना है, और रेड वाला बार हमारा ब्लड मीटर है। स्पेशल मूव्स के लिए हमें ब्लड यूज़ करना होता है, हेल्थ तो सबको पता ही होगी क्या होती है, और सारी मूव्स के लिए हमें स्टेमिना की ज़रूरत है। जैसे अभी मेरा स्टेमिना ख़त्म हो गया तो फिर मेरे प्लेयर ने अटैक करना बंद कर दिया। लास्ट गेम में मैंने अपनी हेल्थ और ब्लड कैपेसिटी दोनों को अपग्रेड किया था, अपना क्लॉ वाला अटैक भी मैंने अपग्रेड किया था, और मुझे स्टेमिना की ज़रूरत है, इसलिए मैं स्टेमिना को अपग्रेड करने वाला हूँ बाद में। ये मतलब किस तरह का जानवर है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि दिखने में तो ये एक म्यूटेटेड रैट लग रहा है, पर जब हम इसे मारते हैं तो कुछ पपी टाइप की आवाज़ करता है। मेरा स्टैमिना खत्म हो गया। स्टैमिना वैसे रीजनरेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर जब हम इसके आगे खड़े हैं और हमारा स्टैमिना ख़त्म हो जाए तो फिर ना तो हम अटैक कर सकते हैं और ना हम वहाँ से हट सकते हैं। वॉकिंग में स्टैमिना नहीं लगता, पर जो हमारा डॉज मूव होता है टेलीपोर्टेशन, ये इसके अंदर स्टैमिना की ज़रूरत होती है।
अभी हम बहुत डेंजरस टाइम पे खेल रहे हैं। ना तो हमारे पास हेल्थ है और ना हमारे पास ब्लड है, तो मैं बहुत आसानी से मर सकता हूँ। अभी मैंने क्लॉज वाला अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें बाद में हेल्थ रीगेन करने के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओह शिट, उसे मारने के हम इतना क्लोज आने के बाद हार गए। So let's try again. What sort of creature is this? सीरो बीस्ट के अगेंस्ट भी मुझे कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जैसे कि मैंने अपने पिछले वाले ओपोनेंट के अगेंस्ट बनाई थी, क्योंकि ऐसे नॉर्मली फाइट करने से तो मुझे नहीं लगता कि ये क्लियर होने वाला है। स्टार्टिंग तो कुछ खास नहीं हुई है हमारी फाइट की, हम ऑलमोस्ट मरने वाले हैं और उसकी यही हेल्थ अभी तक हाफ भी नहीं हुई। एक प्लान है मेरे दिमाग में, जब भी मैं उस पर अपना प्राइमरी अटैक करूँगा ब्लेड वाला ये, तो फिर मैं अपने स्टैमिना को थोड़ा ध्यान में रखते हुए जब हल्का सा स्टैमिना बचेगा तो अपना अटैक रोक के और डॉज अटैक करके वहाँ से चला जाऊँगा। उससे हमारी जीतने की थोड़ी चांसेस हो सकती हैं क्योंकि हमारे पास अभी ब्लड काफ़ी है। अब मुझे थोड़ी ब्लड की ज़रूरत फील हो रही है क्योंकि हमारी हेल्थ और ब्लड दोनों ही कुछ ज़्यादा खास कंडीशन में है नहीं। ब्लड मिल चुका है। जब हम किसी को बाइट करते हैं तो फिर 2-3 सेकंड के लिए वो ओपोनेंट स्टन कंडीशन में रहता है और वो वापस हम पे अटैक नहीं करता, तो उस टाइम मैं अपना सेकेंडरी अटैक करता हूँ जो कि हमारा वो क्लॉ वाला अटैक है। उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है।
सिर्फ एक क्लॉ अटैक और ये मोस्ट प्रोबेबली मर जाएगा। चलो बॉस, हमने बॉस बैटल कंप्लीट कर ली है। अब हमें Not a lot to check, ये कॉप्स but I सर्च should करना है। anyway. ये शायद उसी आदमी का है जो कि बाहर नर्स से बात कर रहा था। आज मैं और कुछ ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ स्ट्रीम में। अगली स्ट्रीम में गेम को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी बस मैं इस कॉप्स को सर्च करके आगे जाऊँगा। अगर ये रीड करना है तो फिर स्ट्रीम को यहाँ पे पॉज करके रीड कर लो। मैं इस पूरे को यहाँ बैठ के रीड नहीं करूँगा। Some voucher for a free हमारा checkup चैप्टर in 2 है Whitechapel. ब्लैकमेल इन What वाइट is Nurse चैपल। Crane up to? I really must find her. नेक्स्ट स्ट्रीम में हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।